Good morning, everyone. In the last lectures, we talked about morality and law. हमने ये देखा कि क्या लॉ और morality में similarity है, क्या differences हैं. Okay. Now, today we will talk about two terms, that is religion and morality. Okay. रिलीजन भी हमें ये कहता है कि आपको क्या करना चाहिए. सबके अपने अपने रिलीजन होते हैं, सब अपने अपनी थॉट प्रोसेस होती है कि क्या हमारे लिए सही है. एक हमारे मन में डर होता है, हमें भगवान का डर बिठाया जाता है, हमें हमें धर्म के अनुसार ये बताया जाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है. और मॉरलिटी इज द सेम थिंग. मॉरलिटी में भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं. आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है. ठीक है. और कई बार हम दोनों को सेम चीज मान लेते हैं, पर अभी इस टॉपिक में हम यही देखेंगे कि क्या इन दोनों में सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है. ओके. सो पीपल ऑफन अज्यूम दैट मॉरल एंड रिलीजियस कन्विक्शंस आर फंक्शनली द सेम थिंग. ऑल सोसाइटीज नीड मॉरल कोड्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव. Without moral rules, there is disharmony and chaos that no society can long survive. The question for this century is, where are these codes to come from? Upon what foundation will society build its ideas of what is right and what is wrong, of what is expected of human beings, and of what is to be disapproved and possible prohibited and punished? ठीक है. हमने कहा कि हमने कुछ मॉरल कोड्स बना दिए, कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए कि ये सही है, ये गलत है. बट क्वेश्चन ये राइज हुआ कि भाई इसका बेस क्या है. आपको कैसे पता चला कि आपको ये करोगे तो ये सही है और ये गलत है. ओके. हाउ कैन यू डिफरेंशिएट, व्हाट इज द फाउंडेशन फॉर दिस थिंग? Now, the term religion signifies a way of life which is deemed conducive to the realization of the ultimate spiritual end of life. In so far a distinction is drawn, it is at times thought valueless for a religionist to think that there is some kind of dependence of morality upon religion. This conflict of moral and religious rules has given rise to some practical consequences. For in a society where morality is not clearly separated from religion, religiosity is often taken as immorality. There are different ways in which one could tie morality and religion. अब क्या दोनों मतलब किस तरीके से हम दोनों को एक चीज मान सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, one might argue that there is a necessary link between religion and morality because of the role religion plays in moral motivation. The reason is that if one believes that some God exists and one wants to please it, then one will behave in a certain way whether God exists or not. रिलीजन में हमने कहा कि अगर आप भगवान को मानते हो तो आपको अच्छे काम करोगे, अच्छे कर्म करोगे, तब आप भगवान को खुश कर पाओगे. ठीक है. और मोरली भी हम यही कहते हैं कि आपको सही चीज करनी है. ठीक है. यू शुड नॉट गो टू द वे दैट इज मूविंग यू टू द रॉन्ग साइड. ओके. So one might argue that the belief in God who will punish and reward us in the afterlife on the basis of our deeds is a necessary component of moral motivation. सेम चीज हम बोल रहे हैं. आपने कहा कि आप अच्छे कर्म करोगे तो भगवान आपसे खुश होंगे. और मोरली क्या क्या बोलते हैं? मोरल, व्हाट इज मोरलिटी? इट इज द प्रिंसिपल ऑफ गुड एंड बैड. ठीक है. आपको ये पता होना कि क्या गलत है, क्या सही है. तो मोरली करेक्ट होना, सही काम करना, वो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है? बाय रिलीजन. Religion can play a supporting role by reinforcing human nature, but it is not the origin of morality. Morals are judgments, standards, and rules of good conduct in the society. They guide people toward permissible behavior with regard to basic values. Mahatma Gandhi's mission was not only to humanize religion, but also to moralize it. He would reject any religious doctrine which was in conflict with morality. महात्मा गांधी का जो मिशन चला था वो रिलीजन के लिए नहीं था, वो मॉरली मतलब उसको मॉरलाइज करने के लिए था. वो किसी भी धर्म का विरोध कर सकते थे अगर वो मॉरली सपोर्ट में नहीं हो तो. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू गांधी, रिलीजन एंड मॉरलिटी आर इनसेपरेबली बाउंड अप विथ ईच अदर. टू गांधी, देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रुथ एंड राइटियसनेस. Morality is prized by almost all the great religions of the world. The emphasis on morality by Gandhi helped his ideas to acquire a universalistic outlook. Religious morality demands universal answers to incredibly complex moral questions. Abortion, for example, is often cited as the clearest case. Mother Teresa claimed in her Nobel Prize acceptance speech that abortion is the greatest evil in the world. And many religious individuals spend a great deal of their time attempting to overturn or supporting legislation that bans specific types of abortions.
नाउ द सेकंड थिंग आती है हमारे लिए मॉरलिटी, एटिकेट एंड प्रोफेशनल कोड्स। एटिकेट सब आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि इसमें तो एटिकेट्स ही नहीं है। एटिकेट का मतलब क्या होता है? हमारा बिहेवियर, कि हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। और मॉरलिटी इज व्हाट, दैट आर द सर्टेन रूल्स, दैट आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, ओके। तो etiquette is concerned with social norms or behavior and is largely cultural rather than moral. It is mainly concerned with manners. Ethics refer to a set of moral principles that relates to the difference between good and bad. Etiquette is a customary code which indicates the proper and polite way to behave in society. The main difference between ethics and etiquette is that ethics relate to principles or conscience, whereas etiquette is related to behavior. Etiquette refers to any special code of behavior or courtesy. Example, it is usually considered bad etiquette to chew with one's mouth open. Rules of etiquette are generally non-moral in nature. आपने कहा कि भाई आप मुंह खुला रख के खाते हो, दैट इज नॉट द गुड एटिकेट, ठीक है। बट ये नॉन मतलब इसको मॉरलिटी में क्या है? मॉरलिटी रूल्स है, प्रिंसिपल्स है कि आपको ये करना है, ये करोगे ये अच्छा होगा, ये होगा, ये सही होगा, ठीक है। एटिकेट्स आपका क्या है? बिहेवियर शो करता है, ओके। थर्ड टर्म हमने यहाँ पे देखी प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशन से हमारा मतलब जनरली हम क्या मानते हैं कि जो आपको कमा के देते हैं, जिस काम के थ्रू आप कमाते हो, पैसा कमाते हो, वो उसको आप प्रोफेशन में मानते हो, ठीक है। तो यूजुअली द वर्ड प्रोफेशन इज यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर ऑक्यूपेशन और जॉब, and if one earns through some activity then he is called as professional. But nowadays profession word is applicable only to certain occupations which meets following specialty. but अब हम तीन चीजें अगर वो कंडक्ट फुलफिल करता है तब हम मानते हैं कि वो प्रोफेशन में है। फर्स्ट, नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक गुड, ठीक है। कन्वेंशनली हम ये मानते आए हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जो जॉब होती है, वो प्रोफेशन में आता है जिसके थ्रू हम कमाते हैं, ठीक है। बट नाउ द डेफिनेशन इज चेंज। अगर उसके नॉलेज है, when the activity involves exercising sophisticated skills, theoretical knowledge, judgment, and freedom to take unique decisions, and requires extensive formal education, technical studies in certain areas, and humanistic studies, generally professional requires continuing education and updating knowledge, ठीक है। आपको प्रोफेशन आप कब बोलोगे? जब आपका नॉलेज अपडेट होता है, आपको कंटिन्यू एजुकेशन मिलती है, ठीक है। सेकंड आता है ऑर्गेनाइजेशन। Dedicated societies and organizations controlled by members of the professions are playing a major role in setting standards, new upcoming trends for the profession, drafting codes of ethics, enforcing standards of conduct, and representing the profession before the society and government. Third आता है public good. The profession serves some important aspect of public good indicated in the codes of ethics. For example, medicine is directed towards promoting health. Law for protecting public's right. Similarly, engineering towards promoting the public's health, safety, and welfare. So, any profession is dedicated on moral ideals. The moral ideals specify virtue, that is desirable feature of character. Virtues are desirable ways of relating to other individuals, groups, and organizations. Virtues involves motives, attitudes, and emotions. Now, the next two terms are management and ethics. Organization management are often responsible for making a variety of business decisions. Those affected by decisions can be either internal or external stakeholders. Part of management's responsibility when making decision is to act ethically. जब मैनेजमेंट को डिसीजन लेता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि द डिसीजन शुड बी मोरली करेक्ट, इट शुड बी एथिकली करेक्ट। अदरवाइज क्या होगा? अगर रैंडमली कोई डिसीजन ले लेता है मैनेजमेंट तो वो उसके बिजनेस को लॉस में डाल सकता है, ठीक है। बिजनेस एथिक्स ऑफन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग एथिकल और मॉरल प्रिंसिपल्स डिफाइंड बाय सोसाइटी. Companies will need to internalize these principles so managers have a framework for ethical decisions. Implement a written code of ethics for managers to follow. कहीं पे भी आप आगे भी जॉब करोगे तो आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट मिलता है कि आपको किस तरीके से, आप ये चीज नहीं करोगे तो आपको क्या मतलब रिवॉर्ड मिले, नहीं करोगे तो क्या आपको पनिशमेंट होगा, क्या चीज होगा। तो एक सर्टेन रूल्स वहां पे गाइडलाइंस आपको दी जाती है कि आपको किस वे में आपको काम करना है। द एथिकल प्रिंसिपल्स कंटेंट इन द कोड कैन बी डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव. A descriptive code requires managers to question what people think is right and follow that pattern when making decisions.
Normative ethics uses the ethics from society to help managers make decisions by focusing on the end result. डिस्क्रिप्टिव नॉर्मेटिव जो है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे. Lack of management will cause disorder, confusion, wastage, delay, destruction, and even depression. Successful management means managing man, money, and material in the best possible way according to circumstances and environment. Most of the Indian enterprises today face conflicts, tensions, low efficiency and productivity, absence of motivation, lack of work culture, etc. This is perhaps due to the reason that managers are moving away from the concept of values and ethics. अगर आप ethically सही decision नहीं लेते हो तब आपका जो है इन सारी चीजों को आपको फेस करना पड़ता है. ठीक है. टू डेवलप ए ह्यूमनिस्टिक मैनेजमेंट मॉडल द फॉलोइंग पॉइंट्स जो है दैट मस्ट बी अडॉप्टेड. जैसे फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग यूनिट एज इन अ वेल नेट फैमिली, कोऑपरेटिव एंड मोटिवेशन मैनेजमेंट, हेल्दी एम्प्लॉय रिलेशनशिप, नो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर, ensuring job satisfaction by correct appraisal of human labor, effectively integrating individual competencies, participative mode of management. ओके. तो जो अभी हमने नॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव की बात करी थी उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. ओके. तो थैंक यू एवरीवन.